आज सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10. So the projectile of mass m is moving to the vertical xy plane and the origin on the ground and y axis क्या है pointing vertically up. ठीक है. So taking the gravitational potential energy to be zero on the ground, the total energy particle written in the planar coordinate में दिया हुआ है. ठीक है. तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं. So express in order to express the total energy particle planar r of theta अगर हम लोग लेंगे ये जो दिया हुआ है ठीक है. So we need to consider the kinetic energy and the potential energy term. So kinetic energy for a particular given kinetic energy अगर हम लोग लेंगे तो वो क्या आता है. So 1/2m r square theta square ये हो गया. So m is the mass, r is the radial velocity and theta क्या है angular velocity. अब ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ये v हम लोग का है माइनस mgh. ठीक है. h इक्वल टू हाइट अबव द रेफरेंस पॉइंट मतलब ग्राउंड से. तो टोटल एनर्जी अगर E ले लेंगे इज द सम ऑफ द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी T प्लस v. सब्स्टिट्यूटिंग द एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं m स्क्वायर minus mgh. So now let's express the potential energy terms in terms of the polar coordinates. So the height can be written as h equal to r sine theta, where r is the radial distance and theta is the angle. Substituting this expression into total energy equation, we get E equal to half m r square theta square minus mg r sine theta. ठीक है. So simplifying further we get half m r square plus m r square theta square minus mg r sine theta. So comparing these expressions will give an answer with respect to C directly, which is this.